Good afternoon, students. Dear students, in our last lecture, we have started with a new topic, which was we have started with the new topic, which was being called to be as the application of derivatives. And in that application, we have started with the first application, which was being called to be as Maxima and Minima. So, when we have started with the term Maxima and Minima, so we have learned that this Maxima and Minima, but it was based upon the certain steps, and that steps what I have explained you in my last lecture, है ना? सब लोग को बड़ा मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कहा था, तो तुम लोग ने लिया था सब लोग ने, राइट? For solving with the sums of maxima and minima, we have learned that for solving with the sum, we require the function, बराबर है कि नहीं? अगर फंक्शन दिया हुआ है तो इट इज वेल एंड गुड, और इन केस अगर फंक्शन नहीं दिया है तो you will have to create the function, and after creating the function, you have to start solving the sum by finding the value of the first order derivative. But a first order derivative, it is been obtained by differentiating the function for the one time, and by differentiating the function for one time, we obtain the value of f dash x. But what is the rule? The rule states that for any maxima or for any maxima or minima, the value of the first order derivative always it should be equal to 0. The value of the first order derivative always it should be equal to 0. And by equating the value of the first order derivative with 0, you can obtain minimum, the one value of x, and maximum, the two values of x. Minimum, one value of x, maximum, two values of x. So let me assume that we have obtained the two values to be as a and b. Step number 3, find the second order derivative. Second order derivative, it is obtained by differentiating the first order derivative again. And in that second order derivative, one by one, you have to substitute the values of x in f double dash x. And by substituting the values of x in f double dash x, if you find f double dash x less than 0, so the given function it is called to be as a maximum function, whereas f double dash x it becomes greater than 0, so it is called to be as a the function, but it is called to be as minimum. But just by knowing that at which point the function is maximum or at which point the function is minimum, the purpose is not going to be solved. Again, you have to go back to the original function, f of x, and in that given function, f of x, one by one, you have to substitute the values of x. And by knowing that values of x, you have to find what is the maximum value of the function and what is the minimum value of the function is. As I told you, the sum is easy, but it is very lengthy. चलो मैं जो बोलूंगा वो एक्सरसाइज स्टार्ट करो. एक्सरसाइज नंबर 4.3 में आओ.
पेज नंबर बड़ा 109, पेज 109, 109 बड़ा. चलो ready. Determine the maximum and minimum value. Determine maximum and minimum values of the following function. Determine maximum and minimum value of the following function. So by first sum, starting with the first sum. F of x is equal to f of x is equal to 2 times of x cubed minus 21x squared plus 36x minus of 20. चलो ready. तो start the given sum as well. फंक्शन दिया हुआ है बड़ा, फंक्शन दिया है इसलिए फंक्शन को बड़ा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. There is no need to create a function. Start the given sum as well. Differentiating both the sides with respect to x. Next step, applying the operator. Applying the operator d by dx on both the sides. Applying the operator d by dx on both the sides. चलो, the derivative of f of x is f dash x is equal to right hand side. Inside the bracket there are 4 terms. You need to apply the operator to all the 4 terms. चलो फटाफट keep solving फटाफट. चलो ready. अब ये देखो 2 is a constant. Derivative of x cube. Answer is 3x square minus 21 is a constant. X square का derivative 2x plus 36 is a constant. Derivative of x is 1. 20 is a constant. So constant का derivative 0. Therefore, f dash x is equal to
6x square minus of 42x प्लस 36 चलो यहाँ तक पहुंचे मैडम। अब यहाँ पे बेटा तुम लोग को एक स्टेटमेंट लिखना है मैडम। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। For any maxima or minima, for any maxima or minima, the value of first order derivative, the value of first order derivative value of the first order derivative, it should be always equal to 0. It should be always equal to 0. इसका मतलब ये देख ले भाई, therefore the value of f dash x is equal to 0. We get the answer as 6x square minus of 42x plus 36. Answer is equal to 0. So by देख लो, the given equation it is a quadratic equation, और ये quadratic equation को और थोड़ा सा सिंपल बनाया जा सकता है by dividing both the sides by 6. X square minus 7x plus 6 is equal to 0. तो यहाँ पे तुम्हें यूज करना है फैक्टराइजेशन मेथड। तुम्हें यहाँ पे ये चेक करना होगा कैसे कौन से दो नंबर्स है जिसका सम -7 आता हो और उसी का प्रोडक्ट +6 आता हो। करेक्ट, वेरी गुड लीरॉय। बट उसे एडजस्ट कैसे करेगा एडजस्ट कैसे करेगा? 6 एंड 1 बराबर है। जॉबिन, वेरी गुड, -6। ठीक है, 6 minus 6 x minus 1 is equal to 0। अब ये देख ले भाई, ये देख ले, therefore
एक मिनट, x minus 6 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. Therefore, ये देख लो, therefore x is equal to 6 or x will be equal to 1. तो लोग रेडी हो, ये देखो जैसा मैंने कहा था ऐसा हुआ बच्चा लोग। क्या कहा था मैंने? कि you will obtain but two values of x, बोला था मैंने। देखो मिले बेटा टू वैल्यूज, चलो मिले कि नहीं बेटा टू वैल्यूज। चलो स्टेप नंबर 2 भी खत्म हो गया। स्टेप नंबर 3, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। Since बेटा f dash x is equal to x square minus 42x plus 36. Next step, again differentiating both the sides with respect to x, applying the operator d by dx on both the sides. Derivative of f dash x is f double dash x x into x square का डेरिवेटिव x minus 320 x का डेरिवेटिव 1, 36 का 0। ये देख लो f डबल डैश x का आंसर मिल गया तुम लोग को। The answer बड़ा it will be, ये देख 6 2 12x minus 42। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तुम्हें किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? आराम से आंसर आ गया सब लोग का? है ना, आराम से आंसर आ गया बेटा सब लोग का। अब उसी के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। व्हेन the value of x is 6, the value of f double dash x is equal to क्वेश्चन मार्क। अब ये देखो सब लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में चेक करो भाई। ठीक, therefore एक
F double dash 6, which is equal to 12 into 6 minus of 42. But at 12 into 6, 72. 72 minus 42, 30. But 30 is